हम बात कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से जिनकी इनकॉर्पोरेशन 1994 में हुई थी और एक लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है। और ये कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस काफ़ी सारे ओईएम्स और टियर 1 सप्लायर्स को करती है। इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे साथ आज जुड़ी हैं सविता बालचंद्रन, जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज की सीएफओ है। ये टाटा ग्रुप के साथ 2 दशकों से ज़्यादा इनका अनुभव ये रह चुका है और टाटा टेक्नोलॉजीज में ये पिछले 3 साल से एज ए सीएफओ नियुक्त है। वेलकम टू जी बिजनेस मैम। थैंक यू। सो मैम, ये मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 19 साल बाद हम देख रहे हैं कि टाटा ब्रांड से एक नया आईपीओ आ रहा है आफ्टर टीसीएस, तो उसको लेकर ग्रुप लेवल पर क्या फीलिंग है, अगर वो आप शेयर कर सके तो। I'd like to believe that everybody is excited about this. I think it's a great opportunity to be representing a brand like Tata, and we hope that we will do well as an organization in that. सो मैम, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एक तो बिजनेस पर बात कर लेते हैं, तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में वाई बेसिस पे जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें पिछले 3 सालों में देखने को मिली है ऑन एन एवरेज, आगे चलकर आगे 3 सालों में अगर आप उसके बारे में कुछ आउटलुक दे सकें, और साथ ही सर्विसेज सेगमेंट जो कि एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपके ओवरऑल रेवेन्यू पाई में, उसको लेकर किस तरह की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। Now, as you're aware, we are doing an IPO, which means that we are bound by regulatory constraints in not being able to talk about future and forward guidances. But we are very excited about the space that we are operating in at this point in time. I think, like you rightly said, the services business, which constitutes 80% of our revenues, our domain expertise largely stems from automotive industry, and that industry is going through major disruptions, and that's affording opportunities for service providers like us to demonstrate our capabilities and partner with leading OEMs as well as tier 1 suppliers in that space. And we are investing heavily in all of those automotive trends that we see right now, starting from electrification, in which we have had presence in over about a decade, and doing some cutting edge work on areas such as embedded and SDVs. And therefore, we are extremely excited about the opportunities that that space represents. And needless to mention, some of the recent events surrounding aerospace as an industry, again, is something that is exciting to us. And we believe that both of these segments offer us opportunities that will help us continue grow for the long term. बिल्कुल, तो काफ़ी सारी सेगमेंट्स और स्पेसेस में आप आगे चलकर एंटर कर सकते हैं। पर साथ साथ एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा एबिटा मार्जिन को लेकर है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो यूजुअल रेंज अभी पिछले 3 सालों में, जब मैंने आपका आरएचपी पढ़ा तो उसमें 16% से लेकर 18.5% के आसपास के मार्जिन में हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। आगे चलकर ये मार्जिन को बढ़ाने के क्या उपाय हैं, क्या सोल्यूशंस हैं जिसको आप देखना चाहेंगे, और अगर आप पॉसिबल रेंज बता पाएँ तो। Now, like you rightly said, we've been able to improve our margins almost by about 400 basis points in the last 3.5 years, from 16.2 to 18.4 in the recent half-year results. And we will continue to look at various methods to improve efficiency in our own operations. Currently, if you look at our global delivery model, compared to many of the players in this space, especially India-based players, our global model is distinct in the sense that we believe that the nature of work we do for our customers requires a certain level of face-to-face interaction, building of trusting relationship, and building intimacy with our customer groups that require us to also have a reasonable on-site, onshore presence. And today our on-site offshore revenue mix is about 50-50. And that is another area where we could look at improving further that would help our margins. We are also constantly looking at improving our delivery processes, efficiencies in that space, so that unit cost of delivery is improved. So people pyramid is an area that's an area of tremendous focus to us. We're also looking at productivity automation as means of improving margins, and pricing as a lever. While that's always something that we have to manage as we look at growing our business. I think a combination of these factors will always be something that we will look at improving further too, so that our margins are in line or better than what the industry delivers.
आई एम श्योर मार्जिन्स को लेकर तो ऑफ कोर्स सबकी नज़र रहेगी कि किस तरह से आप इसको और फर्दर आगे ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑटोमोटिव सेगमेंट में जैसे कि हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, करीबन ओवरऑल रेवेन्यू का अभी 72% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। तो इसको लेकर मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ये इसी लेवल पे रहने वाला है या फिर आपका फोकस इसमें बढ़ेगा तो और फर्दर इसका जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आगे चलकर बढ़ सकता है, या फिर जैसे कि हम देख रहे हैं अन्य इंडस्ट्रीज में वहाँ पर आपका फोकस बढ़ेगा? If you look at what Zinov, which is a leading industry observer for the ER&D space, is talking about, they say that the ER&D market as a whole is about 1.8 trillion. And the biggest segment within that in the manufacturing space is automotive. And overall, the ER&D spend is expected to grow by about 10% according to their report in the next 3 years. But the rate at which the outsourcing spend will grow and the rate at which the spend that's coming into India will grow is expected to be at a much, much faster rate. And we already spoke about the various trends that are impacting that spend within the automotive sector. So that gives us confidence that the opportunity for growth within that sector continues to remain very, very healthy. And we would want to definitely take advantage of that. But that being said, we are also looking at improving our diversification within the industry, and our other two segments of focus, which is aerospace as well as transport and heavy machinery segments, are also providing equal opportunities. And while we think that tailwinds are strong in both areas, there will be more accelerated growth for us perhaps in the aerospace area, given that it's also coming off a lower base. But that being said, I don't see automotive becoming any insignificant proportion of our revenues anytime soon. चलिए, बिल्कुल, तो इस पर तो फोकस रहेगा ही। साथ ही मैम एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जिसमें टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स की हम बात करते हैं तो उसमें एक तो आपने सेपरेट कोटा रख रखा है 10% का। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि इसको लेकर, जैसे अगर मैं टाटा मोटर्स का शेयर होल्डर हूँ तो क्या मैं सिर्फ उस कोटे में अप्लाई कर सकता हूँ या फिर और रिटेल पोर्शन के लिए जो कोटा लाया हुआ है उसमें भी वो अप्लाई कर सकता है? Yes, people who qualify to apply under the quota for Tata Motor shareholders can also apply in either retail or the HNI category. But I would also advise, please read the offer document, talk to your financial advisor so that you're able to make the right selection when you apply for the shares. बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच सविता मैम, जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए, एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। Thank you so much.